बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पे तवज्जो दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the previous lecture headings. In previous lecture, we have discussed return on asset, return on investment, return on total equity, and we have discussed return on common equity. The relationship between profitability ratios already we have discussed, and we have discussed the gross profit margin, trends in profitability of the business, and we have discussed the segment reporting and gains and losses that bypass the income statement of the business, and we have discussed in detail about the interim reports of the business, and we have solved various practical problems. Dear students, today inshallah we will discuss the various more topics like definition of financial leverage and computation of financial leverage. Then we will discuss the earnings per share, how we can calculate the earning per share. Then we will solve the practical problems. Dear students, I would like to discuss one by one. First of all, we will discuss the financial leverage. What is financial leverage? Any ratio used to calculate the financial leverage of a company to get an idea of the company's methods of financing or to measure its ability to meet financial obligations of the business. That is called financial leverage. There are several different ratios we will discuss in the calculation of financial leverage, but the main factors looked at include debt, liability, equity, assets, and interest expense of the business. Financial leverage ratio used to measure a company mix of operating costs, giving an idea of how change in output will affect operating income of the business. Fixed and variable costs are the two types of operating costs, that is, depending on the company and the industry, the mix will differ. Now we will discuss in another angle about the financial leverage. The financial leverage use of the debt is deferred to as financial leverage of the business. Interest as related to debt financing, like a contractual obligation of the business, must be paid regardless of entity current profits of the business. And we will discuss about the contrast with dividends, which are discretionary of the board of directors and of the company. And we will deduct the taxes from the net income of the business. Basically, taxes will reduce the net income of the business. If we will pay taxes to the authorities, our income will be reduced by the taxes, and it will be some items will be reduced the income taxes, like interest expense. If you will pay the interest on the debts for the business, you must deduct the interest from the net income. Then your net income will be reduced by the deduction of interest expense, and you will pay the taxes very low. Dear students,
Now we can discuss about the financial leverage with an example and magnification effects of the financial leverage. You can see data is given. One company is there. Company name is Dwell Company. Financial leverage हम इसकी कैलकुलेट करने जा रहे हैं. Partial income statement is given for the year. First of all, you can see, dear students, in example, base year figures are given. Already we have discussed about the base year. हमने जब इंडेक्स एनालिसिस किया था रेशियोज एनालिसिस में, तो एक ईयर को हमने बेस ईयर डिक्लेयर किया था, तो ये भी उसी तरह के एक बेस ईयर है. आप देख सकते हैं कि अर्निंग इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है दैट इज 1 मिलियन और इंटरेस्ट इज गिवन आपका है 200,000 और आपने जब नेट इनकम से माइनस कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस तो योर अर्निंग इज बिफोर टैक्सेस 800,000. नाउ वी कैन कैलकुलेट दी टैक्सेस. Dear students, taxes rates are given, that is 40% of the income. Then we will calculate 40% of 800,000, that will be 320,000. When we will deduct the tax from the earning before taxes, our total net income will be 480,000. You can see, if we will increase 20% decrease in earnings before interest and taxes, तो फिर क्या होगा? What will happen with the income statement? You can see, पहले आपकी इनकम जो है वो 1 मिलियन है, यानी 10 लाख डॉलर. 20% आप डिक्रीज कर दें तो 20% ऑफ 1 मिलियन that will be 200,000. It will be deducted from 1 million. Total will be 800,000. You can see 800,000 when you will decrease the 20% earnings. Now we can calculate the earning before interest and taxes will be 800,000. Then we will deduct the interest expense. Interest expense is constant, is given, that is 200,000. Remaining balance will be 600,000, that will be called earning before taxes. Now we can calculate the taxes on earnings. What are the taxes? 40% of the tax on the earnings. तो 40% आप किसका लेंगे? You will charge the 40% on 600,000. That will be 240,000. You can see net income of the business is 360,000. You can see your net income has reduced compared than to base year. Now dear students, we can calculate another assumption. First, suppose 10% increase in earnings. 10% increase earning में करेंगे तो वो कैसे होगा? आपकी अर्निंग है 1 मिलियन, 10 लाख. 10 लाख का आप 10% लेंगे, that will be 100,000. 100,000 will be added in the 1 million. तो टोटल आपका जो अर्निंग होगी that will be 11 लाख. उसमें से माइनस कर देंगे आप इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज गिवन 200,000. रिमेनिंग बैलेंस विल बी 900,000. Now we can calculate the taxes, that is 40% of the earnings. 40% of 900,000 लिया, that will be 360,000. We can deduct the taxes from the earning before taxes 900,000. That will be 540,000. At this moment your earning has increased compared than to base years. Now we can calculate the financial leverage. You can see percentage change in net income 25%. How we can calculate? Basically you can calculate 360,000 divided by 480,000. कैलकुलेटर लें और कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. 360,000 divided by 480,000, that is 75%.
that shows the 75%. It means 25% reduce the net income. So dear students, now we can calculate another basically financial leverage. How? Your income is 540,000 divided by base year income, that is 480,000. तो आपकी जो नेट रिजल्ट आएगा that will be 112.5%. It means your earning has increased 12.5% compared than to base year. Another calculation we can solve it, percentage change in earnings before interest and tax. पहले वाली अर्निंग जो नेट इनकम के ऊपर थी फाइनेंशियल लेवरेज, अब परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो भी आप देख सकते हैं एज इट इज आ जाएगा. 20% आपका डिक्रीज हो रहा है सेकेंड ईयर में और 10% इंक्रीज हो रहा है. तो एज इट इज जो ऊपर अमाउंट कैलकुलेट की वो आ जाएगी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. हाउ वी कैन कैलकुलेट A divided by B? What does mean? A is basically percentage change in net income divided by percentage change in earnings before interest and taxes. That will be the formula. तो अमाउंट आप पुट कर देंगे, तो आप अमाउंट पुट कर दें. देखें सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर की अर्निंग है 360,000 डिवाइडेड बाय earning before interest and taxes is 800,000. So that will be 1.25 and 1.25. यानी कि आप एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं. 25% divided by 20%, that will be 1.25. Another calculation is there. We can calculate to 12.5 divided by 10. That is 1.25. That is called degree of financial leverage. क्या किया? सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा. What will be the formula? Earning before interest and taxes divided by percentage change in earnings before interest and taxes. Both calculation we have calculated already. It means first year 25% divided by 20%, that will be 1.25%. Now we calculate for another year, dear students. How? 12.5 divided by 10, that will be 1.25%. That were the basically degree of financial leverage. तो अभी उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में इसको समझ गए होंगे. What shows that net income increase in A is greater than change in earning before interest and taxes. B, due to the fixed nature of interest expense, कि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो फिक्स नेचर का है, वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा. इसकी वजह से आपकी अर्निंग में इजाफा हुआ है कंपेयर दैन टू बी. नाउ वी विल डिस्कस दी हाउ वी कैन कैलकुलेट दी कंप्यूटेशन ऑफ financial leverage. A ratio that measures the sensitivity of a company earnings per share to fluctuation in its operating income as a result of change in its capital structure of the business. Now we will discuss the degree of financial leverage. What will be the measures by the degree of financial leverage? That is, measures the percentage change in earning per share for a unit change in earnings before interest and taxes, and can be mathematically represented as follows. You can see कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. फार्मूला विल बी दी percentage change in net income divided by percentage change in earning before interest and taxes. EBIT means E stand for earnings, B before
I stand for interest and T stand for taxes. तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे. तो what shows that the degree of financial leverage is the multiplication factor by which the net income change in respect to change in EBIT, earning before interest and taxes. Now we can calculate with another formula earning before interest and taxes divided by earnings before tax. तो हम इस तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. A more simple formula for the calculation of degree of financial leverage is given in front of you. So you can follow this formula also. Now dear students, we will discuss in another angle about the computation of degree of financial leverage. Degree of financial leverage calculations should exclude, यानी कि when we will calculate the degree of financial leverage, we need to exclude the various items. Which kind of items we need to exclude? First of all, we need to exclude the minority share of earnings. Already we have discussed about the minority share of earnings in previous lectures. Then, dear students, we will exclude the equity income, okay, from the net income. It means earning before minority of shares of earning and equity earnings. And we need to exclude the non-recurring items from the net income before the calculation of degree of financial leverage. So dear students, you can see formula earnings before minority share of earnings and interest, tax and earning before equity income and non-recurring items. तो आपने फार्मूला में देख लिया होगा, divided by earning before tax, minority share of earnings, equity income and non-recurring items. तो हम डिवाइड कर देंगे किससे? earning before tax, minority share of earnings, equity earnings and non-recurring items. The all-inclusive formula for the degree of financial leverage. So we can calculate the degree of financial leverage with this formula also. Dear students, next topic is what is earning per share. I hope कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. आप इस पर तवज्जो दें, आप स्टडी करें, बुक को फॉलो करें, नोट्स आपके पास हैं उनको फॉलो करें और मेरे लेक्चर को आप सुनें तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी. बहुत आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करवाया जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द अर्निंग पर शेयर. द पोर्शन ऑफ ए कंपनी प्रॉफिट allocated to each outstanding share of common stock, it means allocated to the shareholders. Earning per share serves as an indicator of a company profitability. यानी कि अर्निंग पर शेयर आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है. तो ये भी इससे आपको रिजल्ट मिलता है. एंड earning per share need to require some disclosures for corporate income statements. And earning per shares pertain only to common stock. What does mean? कि earning per share only is related to the common stockholders, that is not related to the preferred stock holders or bond holders or to the debenture holders. Only earning per share deal with the common stock holders. Now we will discuss per share amounts are disclosed. यानी कि पर शेयर अर्निंग जो है उसको भी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, लाइक इनकम फ्रॉम रिकरिंग आइटम्स and income from discontinued operations of the business, and we need to disclose the extraordinary items of the business and net income. So dear students, earning per share का फार्मूला है, we can discuss the earning per share formula is net income minus
प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स, यानी कि हम नेट इनकम से प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्निंग पर शेयर रिलेटेड टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपने जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसकी वेटेड एवरेज ले लेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अर्निंग पर शेयर pertain to the entire fiscal period and average common shares outstanding is used for the parity of the information of the business. So dear students, we can discuss the weighted average common stock outstandings. आपके सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, periods is related to the basically common stockholders outstanding shares is given, like January to June, July to September, and October to December. First period shows that the 6-month period, and second period shows that the 3-month period, and last October to December shows that the 3-month period. You can see shares outstanding, 10,000 shares outstanding is related to the 6-month period, and 12,000 outstanding shares is related to the 3 months shares outstanding, and 15,000 shares are related to the 3-month outstanding shares. So dear students, now we can calculate the basically weighted average fraction of years for आउटस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं अगर 6 मंथ है तो 6/12 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आप क्या करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास जो शेयर्स आ जाएंगे दैट विल बी वेटेड एवरेज 5,000 शेयर्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर अनदर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 divided by 12, and outstanding shares weighted average shares will be the 3,000 shares. Now we can calculate for another 15,000 multiplied by 3 divided by 12, that will be 3,750, and total weighted average shares will be 11,750 shares. So dear students, now we can discuss about the stock dividends and stock splits. You know very well about the stock dividends and stock split. Stock split में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देते हैं या समटाइम्स कम भी कर देते हैं. सपोज 2 for 1. What shows that if you have 1 share, that will be equal to 2 shares. It means if you are owner of the 1,000 shares, now after the stock split you will be the owner of 2,000 shares, because उसने कहा 2 for 1, एक की बजाय 2 शेयर्स हो जाएंगे. तो ये रिड्यूस भी हो सकते हैं. अगर आपके पास मतलब 10 शेयर्स हैं, वो कहेगा जी 1 for 2, इट मीन 10 शेयर्स हैं तो आपके पास 5 शेयर्स हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, रेट्रोएक्टिव रिकग्निशन टू ऑल कंपैरेटिव डेटा is related to the stock dividend and stock split. So dear students, now we will solve the practical problem. मेरे साथ रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will read out the question. Dear students, a firm has earnings before interest and tax of 1 million, means 10 lakh. Interest is given to 100,000 and net income is 400,000 in year 1. The tax rate is 50% on the net income. Now, what is the requirement? First requirement is calculate the degree of financial leverage in base year 1. Now, we need to calculate the another option, that is if earning before interest and taxes increase by 10% in year 2, what will be the
new level of earnings of the company, assuming the same tax rate as in year 1. It means there will be no change in tax rates. So dear students, what is the third requirement? If earnings before interest and taxes decrease to 800,000 in year 2, what will be the new level of earnings assuming the tax rate as in year 1? It means in third option there will be no change in tax rate. Now we can calculate one by one. First of all, we will calculate the degree of financial leverage. मेरे साथ रहिएगा. Computation of financial leverage. Formula will be degree of financial leverage is equal to earnings before interest, tax, expense, minority share of earnings, equity income, and non-recurring items divided by earnings before tax minority share of earnings, equity income, and non-recurring items. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा क्या डिफरेंस है कि आपकी नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में देखें कि इसमें आपका बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें ऊपर वाली नीचे सेम है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. डेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन से. तो डियर स्टूडेंट्स, नेट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, इक्विटी, सबसे पहले आपकी जो नेट इनकम है दैट इज 1 million divided by 800,000 is given earning before tax, minority share of earnings, equity income and non-recurring items. तो सिंपल इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 800,000, that will be 1.25. तो डी स्टूडेंट्स, ये हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने हल कर ली. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंक्रीज बाय 10% इन ईयर 2 और टैक्स रेट विल बी द सेम, तो देन वी नीड टू कैलकुलेट दी व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द बिजनेस. तो देखते हैं जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. First of all, we need to calculate some amounts. Prior earnings
before interest and tax is 1 million plus 10% increase in earnings means 10% of 1 million, that will be 100,000. It will be equal to 11 lakh. That is called adjusted income before interest and tax. ये आ जाएगी 11 लाख. तो डी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि 10% इनकम में इंक्रीज कर दिया जैसा कि रिक्वायरमेंट में था, तो वो 100,000 वो ऐड कर दिया तो 11 लाख आ गया, माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज गिवन इज कांस्टेंट 200,000. तो ये माइनस कर दें तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 900,000. नाउ वी कैन कैलकुलेट द टैक्स. Tax is 50% of earnings, means 50% of 9 lakh, that is 450,000. Net income will be 450,000. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने नेट इनकम कैलकुलेट कर ली. तो अभी हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अगेन कैलकुलेट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, 450,000 हमारी नेट इनकम आ गई, डिवाइडेड बाय लास्ट टाइम कि अगर आप कैलकुलेट करें कि हमारे पास 10 लाख की अर्निंग थी, माइनस कर दिया 200,000 इंटरेस्ट, तो अर्निंग हमारी आ गई 800,000. 50% टैक्स लिया तो नेट इनकम आ गई 400,000. तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमारी उसमें क्या इजाफा हुआ. तो 400,000 से हम प्रीवियस बेस ईयर को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, 450,000 डिवाइडेड बाय 400,000, दैट विल बी 112.5%. बेसिकली ईयर सेकेंड की जो अमाउंट है वो ईयर वन की 112.5% है. इट मीन्स कितना इजाफा हुआ, 112.5 माइनस 100 इज इक्वल टू 12.5 का इंक्रीज हुआ. तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द लेवल ऑफ न्यू अर्निंग्स. तो जस्ट वी वर कैलकुलेटिंग द अर्निंग्स. तो फार्मूला इसका क्या बनेगा कि करंट ईयर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर अर्निंग. 405,000 it is representing to the current year earnings and 400,000 is representing to the base year earnings. Now dear students, we can calculate another problem. What is the third requirement? If earnings before interest and taxes decreases to 800,000 in year 2, what will be the new level of earnings? Assume the same tax rate as in year first. Now we can calculate easily. C part. Earnings after decreasing 800,000 minus interest is given 200,000 constant, that will be 600,000. इसको कहेंगे earnings before taxes. We can calculate tax 50% of earnings. It means 50% of 600,000. Tax will be
300,000. It will be deducted from earning before taxes. Net income will be 300,000. Now we can calculate the earning level. How we can calculate the earning level, dear students? Formula will be current year earnings divided by base year earnings. करंट ईयर अर्निंग्स हमारे पास है 300,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर अर्निंग्स आर 400,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो कैलकुलेटर आपके पास है 300,000 डिवाइडेड बाय 400,000 multiply by 100, that will be 75%. You can see your earning has decreased. How much? 100% minus 0.75, that is 0.25 multiply by 100, that will be 25% decrease in your earnings in second year. तो note dear students, हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट होगी. Now we can solve another practical exercise. What is the exercise? First of all, as usual, we can read out. Dicker Company has the following pattern of financial data for year first and year second. Years first का data आपके सामने है. Net incomes are given for 2 years. Preferred stock is given. 5% means 5% dividend will be paid to the preferred stock holders on the earnings, and weighted average number of common shares outstanding are given 38,000 for year first, 38,000 for year second. We need to calculate the earning per share and comment on the trend. Very simple question. First of all, we will calculate the earning per share. Computation of earnings per share is equal to net income minus preferred stockholders dividend divided by weighted average number of common shares outstanding. So dear students, we can take the amount from the question. What is the amount? 40,000 net income is given, and we can calculate the preferred stock dividend 5% on 450,000. तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं जी. 450,000 इसके ऊपर 5% ले लें आप. That will be 22,500. So dear students, 40,000 income is given minus preferred stock dividend is 22,500 divided by weighted average number of common shares outstanding given है 38,000. इससे आप डिवाइड कर दें तो कैलकुलेट कर लें आप. सिंपल है. 40,000 minus 22,500 divided by 38,000. 0.46. What shows that your earning per share will be the only 0.4 cent
कि $1 भी नहीं मिलेगा आपको, पर शेयर आपको $0.46 मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कैलकुलेशन फॉर द ईयर फर्स्ट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द ईयर सेकेंड। Formula will be the same. Earning per share is equal to net income minus preferred stock holders dividend divided by weighted average number of common shares outstanding. Now we can calculate the preferred stock dividend first. For 5% of 550,000, because second year income is 550,000. 550,000 multiplied by 5 divided by 100. That will be 27,500. So dear students, net income is given as $42,000 for year second. 42,000 minus 27,500 divided by 38,500 shares, weighted average shares. 42,000 minus 27,500 divided by 38,500, that is $0.38 per share. So dear students, in this case your earning is basically has decreased in year 2. So we need to concentrate on the earning per share. Why it is reducing? So as a finance manager, you need to take some measures for the improvement of earning per share. Now basically we need to discuss the earning per share. The decline in earning per share is caused mainly by the issuance of preferred stock and partially by a rise in the common shares. वो कह रहा है जी आपने preferred stock issue किए और partially common shares issue किए. That was the reason for the reduction in the earning per share. So dear students, now we can discuss another question. What is the next exercise? Assume the following fact for the current year is given. Common shares outstanding on January 1st, that is 50,000 shares, and in July 1st 2 for 1, that is basically stock split. If you have one share, now your shares will be increased with 100%. Now you will be owner of 2 shares. Suppose you have 500 shares, now you will be the owner of 1000 shares. That is stock split. October 1st, a stock issue of 10,000 shares. What is the requirement? Compute the denominator of the earning per share computation for the current year. तो ये हमने कैलकुलेट करना है जनाब, अर्निंग पर शेयर ही है, मेरे साथ रहिएगा. जनवरी 1st shares outstanding $50,000 shares. जुलाई 1st को 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट है.
यानी कि डबल हो जाएंगे शेयर्स, यानी 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 100,000 शेयर्स। एडजस्टेड shares outstanding for the year that is 100,000 shares. Now in October 1st, stock issue that is 10,000 shares. Now we need to calculate the proportion of year that the new shares were outstanding that is 0.25, यानी कि 10,000 multiplied by 0.25, that will be equal to 2,500. That is called weighted average for the new shares on an annual basis. That is B and that is A. Now we can calculate the denominator. Of the earnings per share we can calculate computation of for the current year A divided by B. सॉरी A प्लस B। तो A क्या हमारे पास 100,000 शेयर्स प्लस B है 2,500, that will be 102,500 shares. So dear students, already we have calculated the basically total number of shares as a denominator. Requirement were basically 102,500 shares total, basically denominator of the earnings per share. और ये करंट ईयर के आपके टोटल 1,02,500 शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे. व्हाट इज दी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? XYZ Corporation reported earnings per share of $2 in 2002 and in 2003. In XYZ Corporation, reported earnings per share is $1.50, 2 for 1 stock splits. समझ गए होंगे 2 for 1, जिसके पास एक है उसके पास 2 हो जाएंगे. Were declared on July 1st, 2003 and December 31st, 2003, twice a year. What is the requirement? Present the earning per share for a 2-year comparative income statement that includes 2003 and 2002. तो क्या रिक्वायरमेंट है?
अर्निंग पर शेयर 2 साल की बनानी है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मेरे साथ रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर for year 2002. So dear students, 2002 reported earnings per share is given in your data, that is $2. So dear students, 2002 में रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर इज गिवन, दैट इज $2। आप देख सकते हैं सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर इज $2 इन 2002। तो दैट्स वाई हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप इज जुलाई 1, 2003 stock split is given, that is 0.5। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि फॉर स्टॉक 1 स्टॉक स्प्लिट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन जुलाई 1, तो 1.50 आपकी अर्निंग पर शेयर शो हो रही है आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। इसका मतलब है 0.50 आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट, उसी प्रोपोर्शन से आपकी शेयर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डी स्टूडेंट्स 0.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल बी $1 एडजस्टेड 2002 अर्निंग्स पर शेयर now that is called basically adjusted earning per share for year 2002, that is $1 per share. Now we can calculate December 31st 2003 stock split, that is also 0.5 multiply हो जाएगा, that will be 0.50, that is called adjusted 2002 earnings per share. Now we will prepare the comparative computation of comparative earnings per share 2003 years and 2003 and 2002. Earnings per share that is 2003 में 1.50 थी और 2002 में 0.50। तो डियर स्टूडेंट्स 2003 की अर्निंग पर शेयर 1.50 गिवन है और हमने कैलकुलेट करनी थी फॉर द ईयर 2002 विद द वेरियस एडजस्टमेंट्स। तो यू कैन सी आफ्टर द कैलकुलेशन अर्निंग पर शेयर फॉर ईयर 2002 दैट इज 0.50 एंड already earning per share is given in 2003, that is 1.50। तो आप देख सकते हैं कि इन 2003 में आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी कैन डिस्कस अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दैट इज सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। ABC कंपनी shows the following condensed income statement information for the
current year. That is, you can see revenue from sales is given, cost of production sold is given, selling general and administrative expenses are given, and operating income and other incomes are given. And you can see various items are given is related to the current year. What is the requirement here, students? Calculate the degree of financial leverage. First of all, हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करनी है. कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. तो डियर स्टूडेंट्स, आप डिटेल में एक दफ़ा आइटम को दोबारा देख लें. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आइटम सेल के कुछ आइटम हमने डिस्कस किए. ऑपरेटिंग इनकम गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, अदर इनकम इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्सेस गिवन, taxes related to operations are also given, income from operations are also given, extraordinary loss less applicable income taxes 40,000 is given, income before minority interest is given, minority share of earnings is given, and net income at the end of the basically statement is given. And now we will calculate the degree of financial leverage. First of all, we need to write down the formula. Degree of financial leverage is equal to earnings before interest, expense, tax expenses, minority share of earnings, equity income, and non-recurring items divided by. तो क्या लिखा मैंने? Earnings before interest expense, tax expense, minority share of earnings, equity income, and non-recurring items divided by earnings before tax, minority share of earnings, equity income, and non-recurring items. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें डेटा पे जाना पड़ेगा. डेटा में देखें कि योर ऑपरेटिंग इनकम इज गिवन बिफोर टैक्सेस, दैट इज $975,000. ये आप ले लेंगे $975,000 प्लस हम इसमें कर देंगे क्या अमाउंट? इंटरेस्ट हम इसमें एड अप कर देंगे क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है 70,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस, दैट इज 975,000. तो आपने देखा इसमें इंटरेस्ट वगैरह हमने ऐड कर दिए क्योंकि वो इंक्लूड नहीं था. बाकी आइटम एक्सक्लूड करने थे, एक्सक्लूड कर दिए. तो डी स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है. 975,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 975,000, दैट इज 1.07.
तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। हमने इसमें क्या किया, बड़ा सिंपल फार्मूला था कि वी नीड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड अप द फार्मूला। व्हाट वाज द फार्मूला? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, minority share of earnings, equity income and non-recurring items divided by earning before taxes। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। minority share of earnings, equity income and non-recurring items। अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट दैट इज 975,000 प्लस हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, वो 70,000 गिवन है, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स 975। तो फाइनेंशियल डिग्री ऑफ लेवरेज जो है दैट इज 1.07। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टॉपिक्स लाइक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अर्निंग पर शेयर, weighted average number of common shares, and we have solved the various problems in detail। I hope कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे। और we have discussed today basically the topic was related to the assets for the analysis for the मैंने पढ़ ली। तो डियर स्टूडेंट्स, today we have discussed the analysis for the investor basically, and we have discussed in this topic various definitions of financial leverage, and we have learned how we can calculate the financial leverage with the formulas, and we have discussed earning per share। Basically you know कि we have discussed about the various formula related to the financial leverage, related to the earning per share। तो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, बहुत आसान है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एंड वी हैव सॉल्व 4 to 5 practical exercises। These practical exercises has taken from your textbooks, और ऑलरेडी मैं आपको टेक्स्ट बुक बता चुका हूँ, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑथर है उसका गिब्सन, वो बुक आपने डेफिनेटली परचेज कर ली होगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि एक्सरसाइजेज आपकी बुक से ली जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और वो मैं कोशिश मैक्सिमम करता हूँ कि वो एक्सरसाइजेज मैक्सिमम मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूँ, ताकि जब आप घर पे स्टडी आप करेंगे तो आपको रिवीजन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बुक में कम है तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं और बुक से भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो वो भी आपको हल करवा देता हूँ, क्वेश्चन भी आपके साथ होता है और उसका सलूशन भी मैं आपको करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ताकि जब आप इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हो या ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत आसान है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर यह है कि प्रैक्टिस करें, कंसंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अगर आपने इसको कंसंट्रेट ना किया, प्रैक्टिस ना की, एक क्वेश्चन को आप मिनिमम 3-4 टाइम्स करें, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको फार्मूला भी याद होगा, प्रैक्टिस भी होगी, और बार बार आप यही की रिजल्ट को निकालेंगे तो आपको आने वाले तमाम क्वेश्चन में आसानी होगी, क्योंकि आप फार्मूले याद कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। सिर्फ आपने पढ़ाई पे ही तवज्जो देनी है, मेन फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वरना ये सब्जेक्ट आपके तमाम सब्जेक्ट से बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्रैक्टिस आप कल से नहीं बल्कि आज से शुरू कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले लेक्चर तक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।